Hello students, I am Rekha Yadav, your science teacher. Today we will start lesson 8 of science, getting to know plants. Climbers and creepers. While walking around the park, did you find some plants with weak stems? These are different from the herbs, shrubs, and trees. Plants with weak stems that cannot stand straight on their own and spread on the ground are called creepers. तो बच्चों, जब हम कभी ग्राउंड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका स्टेम जो होता है, तना होता है, बिल्कुल ही कमज़ोर होता है। वे खुद से स्वयं से कैनोट स्प्रेड सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उनको स्प्रेड फैलने के लिए या तो ग्राउंड में फैलते हैं, ठीक है, नीचे की साइड फैल जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। Plants with weak stems that take the support of walls or other plants to climb are called climbers. इसके अलावा वे प्लांट जो वीक स्टेम होती है उनकी, लेकिन वे अपने दूसरी या तो दीवार या दूसरे प्लांट्स होते हैं उनके सपोर्ट से जो है ऊपर क्लाइंब करते हैं, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। Parts of a plant. Like us, plants are also living things. They have different parts. Each of these parts perform a specific job. The parts of a plant body are divided into two main systems. These are the root system, the shoot system. पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, तो प्लांट के विभिन्न पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो ईच पार्ट्स होता है वो कुछ स्पेसिफिक जॉब करता है, परफॉर्म करता है, कुछ स्पेशल उसका काम होता है। तो ये जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स को, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द रूट सिस्टम, द शूट सिस्टम। The parts of the plant that grow mainly under the ground form the root system. प्लांट्स के वे पार्ट जो मेन रूप से अंडरग्राउंड रहते हैं, ठीक है, वे रूट सिस्टम होते हैं। The parts like stem, leaves, flowers and fruits that remain above the ground form the shoot system. बाकी के बचे हुए जो पार्ट्स ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, अबव द ग्राउंड, ठीक है, वे शूट सिस्टम होते हैं। Root system. The part of the plant that grows below the surface of the earth is called the root. It always grows towards gravity and moisture and away from the light. The root systems of plants are mainly of two types, taproot and fibrous root. रूट टाइप जो होते हैं बेटा, रूट सिस्टम होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, टैप रूट, ठीक है, और सेकंड फाइबरस रूट। Functions of roots. The main functions of the root are given. Fixation. Roots spread out into the soil and hold the plant firmly to the ground. This prevents the plant from being pulled out easily or blown away by the wind. Conduction. Roots absorb water and mineral salts from the soil and pass them into the stem. The plant uses these to manufacture food and carry out life functions. Preventing soil erosion. Roots help to bind soil particles together. In this way, roots prevent the soil from being blown away by the wind or washed away by water. फंक्शन ऑफ रूट्स, सबसे पहला फंक्शन आता है फिक्सेशंस। तो रूट जो होती है हमारी सोइल के अंदर नीचे फैली हुई होती है और हमारी जो सोइल होती है, मिट्टी, उसको होल्ड किए हुए रहती है हमारे ग्राउंड के अंदर, जिससे क्या कि जो है प्लांट जो है प्रिवेंट होते हैं बाई, जैसे तेज़ हवाएं चलती है, ठीक है, इनसे जो है ये सुरक्षित रहते हैं और ये गिरते नहीं हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्बेशन, जिसके अंदर की रूट जो है, जो हमारी नीचे का ग्राउंड जो सोइल होते हैं उसे वाटर और मिनरल्स ऑब्जर्व करती है, ठीक है, और ये प्लांट्स के फूड के प्रिपेयर के अंदर काम आता है। जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो मिनरल्स और वाटर उसके अंदर काम आते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन। इसके अलावा जो रूट होती है वो सोइल को एक तरह से नीचे बांधे रखती है, बाइंड करने में हेल्प करती है, पार्टिकल्स टुगेदर इन, जिससे क्या होता है कि सोइल जो होती है वो बहती नहीं है, उसका इरोजन नहीं होता है और वो पानी के साथ जो वास्ट नहीं होती है। Modified roots. Roots of some plants are modified to perform additional functions. Let us study some of the root modifications and their functions. Storage of food. In plants like carrot, turnip,
radish, sweet potato and beet. The roots are swollen. These are called storage roots. तो हम रूट्स के फंक्शन देखते हैं कि रूट का जो फंक्शन क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि मॉडिफाइड क्या परफॉर्म एडिशनल फंक्शंस क्या होते हैं रूट के। तो इसमें फर्स्ट आता है स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कैरेट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो, इनकी जो रूट्स होती है वो फूड का स्टोर किए हुए रहती है। तो ये इस टाइप के जो प्लांट होते हैं ये स्टोरेज प्लांट्स के अंदर जो रूट होती है स्टोरेज रूट कहलाती है। Support. If we look at a banyan tree, we can see rope-like growths hanging down from its bigger branches. Some of these growths are long, thick, and penetrate into the ground. These rope-like growths are called prop roots. These prop roots act like pillars and provide additional support to the heavy, spreading branches of the banyan tree. Fixation of नेक्स्ट है एडिशनल सपोर्ट। आप लोगों ने बैनियान ट्री देखा होगा, उसके अंदर जो एक कह सकते हैं हम जो रूट होती है वो ऊपर से हैंगिंग लटके हुई रहती है नीचे की साइड बड़ी बड़ी ब्रांचेस के रूट के अंदर। तो ये जो इनकी जो रूट्स होती है ग्रोथ द कॉल्ड प्रोप रूट कहलाती है इस तरह की रूटें। और ये रूटें क्या करती है कि सोइल को फिक्स किए हुए रहती है जिससे कि उस ट्री को एडिशनल सपोर्ट मिलता है, ठीक है, ब्रांचेज को। इसके अलावा शुगर कैन एंड मेज होते हैं, उनकी स्प्लिट शूट्स होती हैं जो कि उनको एडिशनल सपोर्ट देती हैं। Nitrogen. Plants like peas, beans, groundnuts, moong, and urad have small swellings on the roots, which are called root nodules. These nodules contain rhizobium bacteria that can fix atmospheric nitrogen in the soil and thus make the soil fertile. Plants that contain root nodules are called leguminous plants. नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे पीज, बीन, ग्राउंडनट्स बताए गए हैं, तो इनका क्या काम होता है, इनकी जो रूट्स होती हैं, ठीक है, इनको रूट नोडुल्स कहते हैं। ये रूट जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, उनको क्या करती है सोइल के अंदर ऑब्जर्व कर लेती है सिंपल नाइट्रोजोनियंस में, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेती है और हमारी जो मिट्टी होती है सोइल होती है उसको फर्टाइल बनाती है। तो ये प्लांट जो होते हैं नोडुल्स आर कॉल्ड लेग्यूमिनेशियस प्लांट्स कहलाते हैं। Breathing roots. Many mangrove plants that grow in salt lakes and marshy areas develop specialized roots called pneumatophores or breathing roots. For the purpose of breathing, such roots grow vertically upwards from the underground roots of the plant and come out of the water or marsh. Each root contains numerous pores for exchange of gases. नेक्स्ट है ब्रीथिंग रूट्स। तो कुछ हमारे प्लांट्स होते हैं जैसे साल्ट लैक और मार्सी एरियाज़ के अंदर जिनकी सोइल जो होती है जहाँ पर कि वेरी लेस एयर होती है, हवा जो होती है वहाँ उनकी मिट्टी के अंदर कम होती है, तो ये रूट्स जो है ब्रीथिंग रूट्स कहलाती है। The shoot system. It is the main part of a plant that grows above the soil. It consists of the stem, leaves, flowers, and fruits. The small outgrowths on the stem of a plant are called buds. Buds are of two types: terminal buds and axillary buds. At the top of the shoot is a terminal bud. It is responsible for the vertical growth of the plant. The axillary bud is found between the stem and the leaf stalk. The axillary buds give rise to many branches of the plant. The part of a stem where a leaf arises is called node, and the region of stem between the two adjacent nodes is called internode. Functions of the stem. The main functions of the stem are support. The stem bears and supports the branches, leaves, flowers, and fruits. It spreads out the leaves in such a way
that they get proper sunlight for preparing food by photosynthesis. Conduction. The stem helps in the conduction of water and mineral salts absorbed by the roots of the plant. It also conducts prepared food from the leaves to various parts of the plant, such as roots and fruits. Don't you agree that the stem is like a two-way street? तो फंक्शन ऑफ स्टेम, फंक्शन के स्टेम्स के क्या फंक्शन होते हैं? तो फर्स्ट है टू गिव सपोर्ट। स्टेम जो होता है वो ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स होते हैं, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लीव जो है अरेंज करती है स्टेम से प्रॉपर सनलाइट, जो एक तरह से वो करती है, अरेंज करती है, जो कि फूड के प्रिपेयर के लिए काम आती है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट है टू हेल्प इन कंडक्शन। द स्टेम हेल्प करता है वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करने में बाय रूट्स के। प्लांट्स की जो रूट होती है वहाँ से मिनरल्स और वाटर जो है स्टेम के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। और ये जो प्रिपेयर फूड होता है उसको लीव्स के अंदर फूड बनाते हैं प्लांट्स, उनको जो ट्री के वेरियस पार्ट्स होते हैं उनके अंदर दोबारा से जो है उनको पहुंचाने का काम करता है। Modified stem. Stems of some plants are modified to perform some additional functions. Let us study some of these stem modifications and their functions. Storage of food. Stems of plants like ginger, onion, and potato develop underground. They become thick and fleshy due to the storage of food. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो इस टाइप की जो स्टेम होती है उनसे कुछ टाइप होते हैं, उनके कार्य जो होते हैं उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं, उनके फंक्शन होते हैं, जिनमें फर्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड। तो जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे जिंजर, यूनियन, पोटैटो, इनकी जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड डेवलप होती है, ठीक है, और वहाँ पर जो ये अपना फूड का स्टोरेज कर लेती है जिससे कि वो नीचे जाकर वो मोटी हो जाती है। Food manufacture. Plants like cactus and opuntia grow in deserts or in very dry places. In such plants, the stem is modified into a thick, fleshy and green structure. These stems manufacture food by photosynthesis and also conserve water. नेक्स्ट फूड मैन्युफैक्चर। तो कुछ प्लांट्स होते हैं कैक्टस, ये जो है डेजर्ट के अंदर ग्रो करते हैं जो कि वेरी ड्राई प्लेस होता है। तो ये प्लांट जो होते हैं इनकी स्टेम जो होती है मॉडिफाई हो जाती है इनटू थिक, फ्लैशी एंड ग्रीन स्ट्रक्चर्स के अंदर। और ये स्टेम के अंदर जो फूड मैन्युफैक्चर्ड होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के तहत, ठीक है, जो इनके प्रोसेस, इनके अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है और ऑल्सो कंजर्व वाटर, और ये जो है वाटर को भी कंजर्व करते हैं। Defense. In some plants like citrus and bougainvillea, the buds in the stem are modified into hard, pointed and sharp structures called spines or thorns. These structures prevent animals from eating the plant. नेक्स्ट डिफेंस। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे सिट्रस एंड बोगेनवेलिया, ये जो होते हैं इनकी जो स्टेम्स होती है मॉडिफाइड इनटू हार्ड पॉइंटेड और शार्प स्ट्रक्चर होते हैं, इनके ऊपर कांटेदार संरचना होती है जो कि स्पाइनेज और थोर्स कहलाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इनको एनिमल्स के खाने से इनके प्रिवेंट करता है, सुरक्षा करता है। The leaf. The leaf is a flattened, thin, green lateral structure attached to the stem. It is also known as the kitchen of the plant as it manufactures food with the help of chlorophyll present in it. नेक्स्ट पार्ट आता है प्लांट्स का लीफ। तो लीफ एक ग्रीन लैटरल स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम से अटैच्ड होता है। इसको किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि लीफ जो होती है प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती है, मैन्युफैक्चर करती है हेल्प ऑफ क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, यानी कि जो प्लांट्स का फूड मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंट में वो लीफ में ही होता है। Parts of a leaf. A leaf grows on the stem at a node.
It is attached to the stem by means of a stalk called petiole. The flat green portion of the leaf is called the lamina or leaf blade. The petiole continues in the leaf as a thick midrib in the center. The midrib on either side branches out as veins to form a network. The veins transport water, minerals, and food. Venation. The arrangement of veins on leaf blade or lamina is called venation. नेक्स्ट वेनेशन, तो एक वैन्स का जो अरेंजमेंट होता है, जैसे कि पहले हमें बताया पत्तियों के अंदर जो ये लंबी संरचना होती है, ये वैन होती है. ब्लेड और लेमिना इज कॉल्ड वैन्स. तो इनके जो अरेंजमेंट होता है लीफ का, ठीक है, लीफ ब्लेड, तो इसको वेंसन कहते हैं. It is of following two types: reticulate venation, parallel venation. Reticulate venation. If the veins form a net-like pattern on the midrib in a leaf, the venation is called reticulate venation. This is commonly seen in the leaves of the peepal, China rose, mustard, cabbage, lemon, neem, lychee, and mango trees. Parallel venation. If the veins run parallel to the major midrib and parallel to each other, the venation is known as parallel venation. This is commonly seen in the leaves of the bamboo, banana, sugarcane, and palm trees. Functions of a leaf. In the presence of sunlight, green leaves mix together water, minerals, and carbon dioxide to make food. This plant food is a kind of sugar called glucose. During फंक्शन ऑफ लीव, फर्स्ट फंक्शन है मैन्युफैक्चर ऑफ फूड. तो प्लांट जो होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर मिनरल्स और वाटर को ऑब्जर्व करके सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर फूड प्रिपेयर करते हैं, और यह फूड जो उनको ग्लूकोज फॉर्म में प्लांट्स में मिलता रहता है. food making, leaves give off oxygen. This process of making food by green plants is called photosynthesis. Photo means light, and synthesis means putting together. This may be written as carbon dioxide plus water and minerals. When they receive energy from sunlight and chlorophyll from leaf, give glucose plus oxygen. The glucose produced in the process of photosynthesis is stored in the leaf as starch. As green leaves prepare food, they are called the food factories or kitchen of the plant. Other functions of leaves. Defense. In some plants, such as cactus, date palm, and prickly poppy, either the entire leaf or a part of the leaf is modified into spines for defense. अदर फंक्शन ऑफ लीव्स में इसमें कुछ एग्जांपल देगी हमें प्लांट, जैसे कैक्टस, डेट, प्लाम, प्रिकली. तो इनकी जो लीफ होती है वो मॉडिफाई करती है इनकी डिफेंस सुरक्षा करने में. इनके ऊपर कांटेदार संरचना होती है जो इनको एनिमल्स के खाने में इनके खाते की अगर कोशिश करते हैं तो उनसे जो है डिफेंस प्रोवाइड करती है. The leaves of the cactus plant, which are modified into spines, prevent the loss of water. They protect the plants from grazing animals as well. Provide support. In some plants, such as pea, masoor, lentil, and glory lily, the stems are very weak to stand erect. In such plants, the leaves or leaflets are modified into leaf tendrils. Leaf tendrils coil themselves around some support and help weak-stemmed plants to climb up to expose their leaves to sunlight.
नेक्स्ट है प्रोवाइड सपोर्ट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे पी, मसूर, लिली, इनकी स्टेम जो होती है, तना बहुत ही वेरी वीक होता है। तो इन प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं, लीफ फ्लैट्स आर मोडिफाई इनटू लीफ टेंडरिल्स। तो ये जो लीफ टेंडरिल्स होते हैं, इनकी जो एक जैसे कि पिक में दिखाया गया है, ठीक है, ये इनको स्वयं को अपना सपोर्ट ले लेते हैं। प्लांट्स विथ वीक, इनकी जो स्टेम जो इनका वीक होता है, ठीक है, तो उसके लिए जो ये लीव्स होती है, ये दूसरी अदर चीज़ का जो सपोर्ट ले लेती है, जिससे कि ये ऊपर चढ़ जाते हैं, क्लाइंब अप हो जाते हैं। Reproduction. In some plants, such as Bryophyllum and Begonia, buds develop into leaves. These buds grow as new plants. Storage of food. In some plants, leaves are modified to store food. For this purpose, leaves become thick and fleshy. An example is onion. नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स जो है वो फूड को स्टोर करने का काम करती है। तो ये लीव्स जो होते हैं वो थिक और फ्लैसी होते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ऑनियन। Flowers. Flowers are the most beautiful part of a plant. Different plants have different types of flowers. Flowers are of many sizes, shapes, and colors. They have different kinds of fragrances. Some common flowers are hibiscus, rose, jasmine, sunflower, marigold, and lily. Flowers contain the reproductive organs of a plant. Parts of a flower. The main parts of a flower are pedicel, sepals, petals, stamens, pistil. Pedicel. The flower is attached to the stem by a stalk called pedicel. The uppermost part of the stalk is somewhat swollen. This swollen part of the pedicel is known as thalamus. Sepals. The green leaf-like parts in the outermost circle of a flower are called sepals. They protect the flower during the bud stage. Petals. These are usually brightly colored due to the presence of colored pigments. The bright colored petals serve to attract insects. These insects in turn help in pollination. Stamens. They are found just inside the petals of the flower. They are usually 4 to 6 in numbers. The stamen is the male reproductive part of a flower. Each stamen consists of a thin stalk called filament and a two-lobed head called the anther. Each anther tube has 2 pollen sacs that are filled with pollen grains. Pollen grains are a yellow powdery substance. They contain the male sex cells of the flowering plant. Pistil. In the center of a flower, there is a flask-shaped organ called pistil. The pistil is the female reproductive part of a flower. Each pistil consists of an ovary, style, and stigma. Functions of the flower. The main function of the flower is to produce fruits and seeds. The fruits and seeds are formed in a flower by the process of pollination and fertilization. फंक्शन ऑफ फ्लावर्स का मेन फंक्शन होता है फ्लावर का, वह होता है फ्रूट और सीड्स का प्रोड्यूस करना। तो फ्रूट्स और सीड्स जो बनते हैं फ्लावर के अंदर, वो पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में से बनते हैं। The transfer of pollen grains from anther to stigma of a pistil is called pollination. Pollination is done by insects.
wind, and water. When pollen grains fall on the stigma, they move down through the tube called style and reach the ovary. In the ovary, the male sex cells present in the pollen grains fuse with the female sex cells present in the ovules. The fusion of male and female sex cells is called fertilization. After fertilization, the ovules grow and become seeds. The ovary of a flower grows and becomes fruit with seeds inside it. The fruit protects the seeds. The other parts of the flower dry up and fall off. Let's start this lesson question answer. Exercise very short answer question. Question number first. Why are leaves now as kitchen of the plant? Answer. As green leaves prepare food for plant, they are called food factories or kitchen of the plant. Question number 2. How does exchange of gases take place in plants? Answer. In plants, exchange of gases takes place through the stomata. Question number 3. What are the main function of leaves? The main function of leaves are manufacture of food, exchange of gases and transpirations. Next question. Name 2 plants with the leaves that are modified into spines. Cactus, prickly poppy. Question number 5. Name 2 plants that have taproot. Answer. Mustard, pea. Question number 6. What is male reproductive parts of a flower called? Stem. Next question. Name 2 plants that have reticulate venations. Answer. People and mango. Next question. What is the function of stem in a potato plant? The stem of a potato plant that is present above the ground makes food by photosynthesis, and the underground stem of potato plant stores food and it's edible. Next question. What is the difference between node and internode? Answer. The part of stem where a leaf arises is called node, and the region of the stem between the two adjacent nodes is called internode. Next question. What happens when pollen grains falls on the stigma? Fertilization or pollination. When pollen grains fall on the stigma, they germinate and move down through the tube called style and reach the ovary. Inside the ovary, the male sex cells present in the pollen grains fuse with the female sex cells present in ovules. This is called fertility. Next exercise is short answer question. इसमें question number first है what is venations? Name 2 plants that have parallel venations. The arrangement of veins on leaf, blade or remains is called venations. The leaves of bamboo and sugar can have parallel venations. Next question. What happens to the ovule and ovary after fertilizations? After fertilization, the ovules grow and become seeds. The ovary of a flower grows and become fruits. The fruits protect the seeds. Next question है बेटा आपका Sonali sees an uprooted peach plant. She noticed some swelling on the roots called root nodules. What do these root nodules contain? These root nodules contain a nitrogen fixing bacteria ribosome. Next question है what is pistil? Pistil is a flask-shaped organ present at the center of a flower. This pistil is the female reproductive parts of the flower. Each pistil consists of stigma, style and ovary. How can you say that ginger is a modified stem? Ginger is stem because like stem is also has nodes, internodes, buds and scaly leaves. It is modified to store food. स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रांसपायरेशन ऑफ प्लांट्स. तो इसकी एडवांटेज है फर्स्ट इट हेल्प्स इज कूलिंग द प्लांट बॉडी जस्ट एज लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्वीटिंग हेल्प्स अस टू कीप कूल. सेकेंड है व्हेन लीव्स लॉस वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन मोर वाटर एंड मिनरल्स आर पुल्ड अपवर्ड फ्रॉम.
What is the difference between taproot and fibrous root? Explain the relationship between types of roots and leaf venations. आंसर आ जाएगा टैप रूट इज ए स्ट्रेट रूट विथ ग्रोस वर्टिकली डाउन इनटू द सोइल एंड गिव्स आउट ब्रांचेज ऑन all the sides. Tap root is the main root and the smaller side roots are called lateral roots. The fibrous roots consist of many thin fiber like roots of same. Next question, what is the difference between making of food by leaves and making of food in the kitchen? Answer that plants prepare their food in the presence of sunlight and chlorophyll with the help of water, minerals and carbon dioxide. The plant's food is a kind of simple sugar called glucose. The food making in kitchen is made from plant and animal product by cooling. Next question, tomato, brinjal and lemon are fruits. Comment. Tomato, brinjal and lemon are fruits because they are formed from manufacture of ovary. They contain seeds. Question number 5 है, if you remove the stems of all the pea flowers in a garden, which phenomenon will be affected? Fruits formation, pollinations and fertilizations. तो इसमें आ जाएगा pollination. Next question, if you find more climbers in a thick forest, why? Climbers are plants with weak stems that take the support to climb. In thick forest there are more climbers because trees provide support to the climbers. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बेटा आप छोड़ देंगे, नेक्स्ट इससे